that is time dilation. This is again a very interesting observation. And yes, this observation is more significant when your speed is about to speed of light, or you can just approximate your speed to speed of light. Means you can have a speed something like 0.8 c, 0.6 c kind of thing. So this is one particular concept known as what? Time dilation. So before going to time dilation, let me explain you one particular observation, and then we will discuss how time dilation will come into picture. So it's a very nice observation. So this is our cosmic plane, and we can assume this is our Earth. And in the cosmic plane, so there are n number of high energetic reaction can take place, and the new particle can form into this region. And the source of that particle on the surface of Earth is nothing but only from this particular area, such that here you have a lot of reaction take place, and particle will come here, and it will come to the basically surface of Earth. So let us assume there is a distance between, and this is theoretical knowledge, distance between this cosmic plane and surface of Earth is, let's say, L0. So this is the complete distance. So obviously, if something is going to form at here, and it will find, and it will also appear at this point, that means that particle have to travel minimum distance of L0, isn't it? होना चाहिए, है ना? कि कुछ भी अगर यहां फॉर्म हो रहा है, अगर वो पार्टिकल यहां तक आ रहा है, that means that particle have to travel minimum distance L0. And most important thing is that this particle, let us assume this pion, we can give the name of this particle. This is pion, and whose lifetime is tau naught. So what is lifetime? After time tau naught, this pion will be lose its all identity, and it will just complete lost itself. And we can also measure the speed of this pion. Let's say this V is nothing but alpha C. So if so what is our observation? Our observation is that what should is going to happen? The pion must travel this much of distance. That means we expect V into tau naught must be greater than L0. सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? आप यही तो एक्सपेक्ट करोगे ना? Are you able to understand this particular experiment? Some particle is formed here, and it is coming to the surface of Earth. So it has to travel this distance with velocity v, and the lifetime is tau naught. So v into tau naught must be greater than L naught. ये होना चाहिए, तभी तो यहां तक आएगा ये. Yes या no? Please communicate me. Yes, sir. है ना? Okay. Now, this is our expectation. When we going to calculate it, what we find? We find v into tau naught is equal to some value h, and which will less than L naught. So what is meaning of that? Meaning of that,
the pion have to decay at some height h. हमने जो कैलकुलेशन किया, जो हमारे पास डेटा दिए हुए हैं, उस डेटा के अनुसार, from using that data, if we are going to calculate, we have find that this distance is h, and which is nothing but the less than L naught. So pion को तो यहीं तक खत्म हो जाना चाहिए. But what is fact? Fact क्या है? Fact is that pion is traveling more distance. So आपको किसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा? इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा या इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा? फर्स्ट वाले को या सेकंड वाले को? एज ए फिजिसिस्ट, जस्ट टेल मी. एज ए फिजिक्स स्टूडेंट, यू हैव टू ऑलवेज रियलाइज एन ऑब्जर्वेशन, है ना? ये तो फैक्ट है ना कि पायोन यहां से चल रहा है और ये यहां पहुंच रहा है. आर यू गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? ये तो फैक्ट है. दिस इज लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट. सो दिस इज आवर एक्सपेक्टेशन, बट कैलकुलेशन इज दिस वन. सो विच वन इज करेक्ट एंड विच वन इज रॉन्ग? कौन करेक्ट है और कौन रॉन्ग है? कैलकुलेशन इज करेक्ट. कैलकुलेशन इज करेक्ट. चेक करना पड़ेगा. आप समझ नहीं रहे हो भाई. सॉरी. आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको ये दिखाई दे रहा है कि पायोन वहां पर से बना और अर्थ तक पहुंच गया. पायोन मेक एट द कॉस्मिक प्लेन एंड इट विल रीच टू द सरफेस ऑफ अर्थ. तो इसे आप नेग्लेक्ट थोड़ी कर सकते हो. दिस इज द फैक्ट ना. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, कैलकुलेशन को भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. कैलकुलेशन को नेग्लेक्ट कर सकते हो सकता है कि मेरी थ्योरी गलत हो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? When you will see some observation, then you have to give your theory according to that observation. Now, this is all about physics, isn't it? Yes, sir. This is all about physics. ये समझने की कोशिश करो. This is very important thing. हमने जो देखा, हमें उसी को तो जस्टिफाई करना है. आपने क्या देखा? What you have seen? ये जरा बताइए. What you have seen? आपने देखा पायोन यहां बना और सरफेस ऑफ अर्थ तक चला आया. दिस इज योर ऑब्जर्वेशन. तो आपको एक ऐसी थ्योरी देनी पड़ेगी ना, जिससे कि ये जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है विद दिस वेलोसिटी इनटू सम पर्टिकुलर टाइम मस्ट बी ग्रेटर देन एल नॉट. तभी तो यहां तक पहुंच पाएगा. मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम इन आवर कैलकुलेशन. यहां पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है. दिस इज आवर ऑब्जर्वेशन. सर. हाँ, बताइए. सर, अगर v इंटू टाउ नॉट ग्रेटर देन एल नॉट है, हाँ, तो अर्थ तक अच्छा इक्वल्स टू एल नॉट नहीं हो सकता सर? इक्वल टू भी हो सकता है. ग्रेटर देन इक्वल टू कर लो, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं. ठीक है, ओके सर. ओके सर. ग्रेटर देन इक्वल टू कर सकते हो. देयर इज नॉट एनी प्रॉब्लम, है ना? Okay, लिमिटिंग sir. केस आप रख सकते हो ऑलवेज. ठीक है. ओके सर. हाँ, बट देखो सिंपल सी बात है. ये आपने ऑब्जर्व किया है ना, तो आपका एक्सपेक्टेशन यही होगा ना. लेकिन आपने जब कैलकुलेशन किया तो आपको ये मिल रहा है, एंड विच इज लेस देन एल नॉट. तो निश्चित रूप से यू हैव टू गो विद द माइंड स्ट्रॉमिंग सेशन. क्या ऐसा हो रहा है कि यहां पर पार्टिकल पहुंच जा रहा है, हमें क्या अपने कैलकुलेशन में ठीक करना पड़ेगा. एंड हियर द पिक्चर कम, here the concept of time dilation come into picture. Are you getting my point? ठीक है. So let's try to come to the time dilation. What is time dilation? वो जरा देखने की कोशिश कीजिए. So let us try to do one experiment
इन अ लैब, और ये लैब में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, इसको जरा देखते हैं. And this is one of the beautiful explanation of time dilation. But before that, we have to just try to understand some basic definition. So first definition is proper time. Proper time. So if relative speed between watch and observer is 0, then observer will measure proper time. Then observer will measure proper time. And if and you are just talking about the same event, सेम इवेंट को दो ऑब्जर्वर देख रहे हैं, एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में वॉच मूव नहीं कर रहा है, दूसरे ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में वॉच मूव कर रहा है, एंड यू आर वॉचिंग द सेम इवेंट. ओके, देन व्हाट यू विल हैव, इफ देयर इज, यहां वो वॉच की जगह पर क्लॉक लिख दो, दिस इज साइंटिफिक वर्ड है ना, क्लॉक. इफ देयर इज relative speed between observer and clock, then observer will measure dilated time. Dilated time means he will see, suppose some person who is rest with respect to clock and he is watching the event into that clock, then suppose he will see that the whole event is going to complete it into 1 second, and the another observer, and with respect to him, if clock is moving and he is watching the same event with the moving clock, then what will happen, he will see that this event will take more than 1 second. Depends on what is speed of watch or speed of clock. So let us try to do one experiment, and this is very nice experiment. इसको जरा हम करने की कोशिश करते हैं, and you can see how you can visualize this particular time dilation, how your time is going to dilate it. बढ़ जा रहा है time if you are watching the event in a moving clock. So let's try to see all these things. Okay. So this is very nice experiment. Now look at what is going to happen. This is wonderful experiment, and I will also send you one YouTube video, and that same experiment is also executed in some show also. Okay, so you can see that one. It's a wonderful. So suppose there is an observer, and this observer, let's say this is X observer. There is an observer, let's say he is Y observer, and this train is moving with velocity v with respect to x, or let's say this is some sigma. So this train is moving with velocity v with respect to sigma or with respect to x. And in this train, there is one experiment is going to happen. So there is a source of light and there is a mirror just on the roof of this particular train, and source of light is on the floor. And
what will happen? And there is just beside this particular thing, there is detector, and you can assume the source and detector is also a same thing. So just you can assume theoretically, and you can assume the detector is just beside this particular source. And this distance is nothing but L naught. So now, with respect to y, what will be this distance? With respect to y, what will be this distance? L equal to L naught into 1 minus V over C square. आराम से सोच करके. With respect to y, this distance is Sorry, always sir. L naught. Proper length. Proper length. Proper length. With respect to x, this distance is? बताओ. L into 1 minus L naught. ये vertical है ना? इस आपका i cap direction में जा रहा है. This is in y cap direction. So y cap Zero. direction में कोई भी length contraction होगा क्या? 0. नहीं. There is not any length contraction. So this distance for y and x for both one, that this distance is same. Now, what will be speed of light for both the observer? Same, C. Same. This is all about a special theory of relativity. Now look at what is going to happen. So light pulse will come here. It will go and collide it, and it will come back. So total time measured by y is equal to 2L naught by C. Everyone is comfortable? Total time is nothing but 2L naught by C. होगा ना? Yes. Easily. पूरा distance गया और वापस आ गया. So total time is 2L naught by C. Now, let's see what this person is going to observe to this particular event. इस पूरे के पूरे event को ये person कैसे देख रहा है? Okay, this person. Now, look at this is very interesting. The X will see something like this, isn't it? Everyone? X कुछ ऐसा ही देखेगा ना? Yes. ऊपर से कुछ गिरता है. हाँ, लाइट ऊपर गया और वापस आ गया. ठीक है? But what will happen to y कैसे दिखेगा? Y will see that this will go here and it will come back. Go here, come back. It's okay? Now x कैसे दिखेगा इसे? So now look at what is going to happen. Just wait. Now look at what is going to happen. The mirror is moving with respect to x. So if mirror is moving, and what is event? Event is that the light pulse have to collide to the mirror. So अगर mirror ऐसे move करेगा, light pulse ऐसे जाएगा, तो कभी क्या collide करेगा क्या? Can you repeat, please? What I am saying, if mirror is moving something like this, and light is moving only in vertical direction, then is that this will collide to mirror? This light pulse will collide to mirror? No, sir. Never. So how it will collide? When your light pulse is going to chase your mirror in every second, something like this, isn't it? So this person will see this light pulse will make a rectangular shape. आप कुछ इस तरह से देखोगे. T is equal to 0 पर source यहां है, and this is your mirror, and as mirror is moving, the light pulse is going to chase this particular mirror, isn't it? So light pulse have to chase this particular mirror, and after then it will come to the detector. Everyone is comfortable? And don't think about source. Source और mirror हमेशा ऊपर नीचे ही हैं. I am talking about light pulse जो source से निकल गया है, मैं उसकी बात कर रहा हूं. In another way, what I am going to say,
that in a time this mirror will move from here to here in the same amount of time. This light pulse must move from here to here. Am I correct or wrong? करेक्ट. करेक्ट है ना? फिर से सोच लीजिए, प्रॉब्लम होती है लोगों को समझने में. What I am saying, in the time when mirror will move from this point to this point, in the same time the light pulse will move from here to here. Then only this light pulse is going to collide with mirror. Otherwise, it is not going to collide. Everyone is comfortable? Sir, Huh? sir, when mirror is moving, the source is also moving. Source in is the same moving, yes, very direction? good. But light pulse is leaving the source, na? अब Oh, एक okay. एज्यूम कर लो, बॉल एज्यूम कर लो, ठीक है? और Yes, गन sir. है ना, गन रखा हुआ है, और गन नहीं, गन और मिरर एक साथ जा रहे हैं, बट बॉल जो गन से निकल गया वो तो उसको एंगल बना के मार पाओगे ना? Yes, sir. ठीक है? तो सोर्स विल बी जस्ट बिहाइंड द मिरर, डोंट वरी, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. बट व्हाट इज इवेंट? इवेंट क्या है, जरा ये बताओ. That light Collide with pulse mirror. which would leave the source is going to hit the mirror. Yes, है ना? यही तो इवेंट है. और ये इवेंट तो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है? हो रहा है. हो रहा है. तो ये इवेंट अगर हो रहा है इसके रेफरेंस फ्रेम में, तो इसके रेफरेंस फ्रेम में भी तो होगा ना? Yes. और अगर ये होगा तो कैसे होगा? ऐसा ही तो होगा इसके रेफरेंस फ्रेम, अदरवाइज कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है. Yes. Agreed? So now what I can write? I can write t. So this distance is nothing but c into ty by 2. 2 इसलिए ले रहा हूं क्योंकि टोटल डिस्टेंस टाइम है, टोटल टाइम ty है, tx है ना, दिस इज बेसिकली tx. This will be L naught always. And what is this distance? What is this distance? यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है? VTX. Very good. V into tx by 2 है ना? tx by Yes, sir. 2. Okay. Now you can easily use Pythagoras theorem. Pythagoras theorem use कर सकते हो क्या? So when you are going to use Pythagoras theorem, you have c square minus v square tx by 2 whole square is equal to L naught square. ठीक है? And now tx can be written as 2L naught by c root under 1 minus v square upon c square. जरा देखो मैंने सही लिखा या नहीं? इसको नीचे ले गए, c को कॉमन ले लिया, ऊपर ले गए. Am I correct or false? ठीक है ना? Yes. Yes. And what is this 2L naught by c? TY. 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 Now tx is equal to ty by 1 minus v square upon c square. And now you can see this tx is greater than ty, isn't it? This tx is greater than ty. And this is जो इवेंट y के रेफरेंस फ्रेम में हो रहा था, सम 2L naught by c time से, that the same event is going to be dilated with respect to x. And why it is going to happen? Because you can visualize that every reference frame has attached a clock with itself. और ये जो पर्सन देख रहा है वो पूरे इवेंट को कहां देख रहा है? इसी क्लॉक में देख रहा है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहां पर जो क्लॉक है इसी क्लॉक में देख रहा है, isn't it? और ये पर्सन भी इसी क्लॉक में देख रहा है. Now this person will see the event into this clock, then this clock is rest or moving. Rest.
Rest. No, rest. So he will see the proper time or dilated time? Proper time. Proper time. But this person will see the whole event in this clock, dilated or proper? Dilated. Dilated. And now we can have a wonderful formula, that is tau is equal to tau naught root under 1 minus v square upon c square. This is nothing but a very famous, and this tau naught is nothing but identified as what? Proper time. And this tau is nothing but what? Dilated time. Dilated time. Now, from here, you can visualize, you can appreciate the new concept of time dilation. And now we can use this concept in our previous pion part. तो देखते हैं pion part में क्या हुआ. Now, Sir, हाँ बताओ. sir, it means dilated time is always greater than proper time. Always, always. Now, अब हमारे पास जो डेटा है, इस डेटा को जरा हम देखते हैं. Let's try to see all this data. जो डेटा है वो जरा देखते हैं. So, this is my earth. This is my pion. And there is observer on earth. You can also assume there is observer on pion also. हो सकता है एक hypothetical observer हो pion पर. ठीक है. Now, the velocity v is equal to alpha c is measured by observer on earth or observer on pion. अर्थ है ना. जो पायोन पर बैठा हुआ उसको क्या स्पीड नजर आएगी? उसको कुछ भी स्पीड नजर नहीं आएगी, लेकिन उसको कुछ और नजर आएगा. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग. अभी बात करते हैं. नाउ, ये जो लाइफ टाइम हमने लिया था, दिस टाउ नॉट लाइफ टाइम, ये जो लाइफ टाइम हमने लिया था, दिस लाइफ टाइम इज अ थ्योरेटिकल वैल्यू. theoretical value when observer is rest with respect to pion. Means इसके ऊपर जो क्लॉक लगा हुआ है, are you getting my point? You can assume there is a clock attached to this particular pion and observer is also attached to that particular pion. So the observer who is attached to pion will see this clock as moving clock or stationary clock? Stationary clock. So he will measure proper time or dilated time? Proper time. Now look at here. Now this person who is in earth, what he will see, if he is going to see this particular event with this clock, then he will see proper time or dilated time? Dilated time. So this person have to change its time, lifetime, and that lifetime must be equal to tau naught root under 1 minus v square upon c square. And here tau is greater than tau naught. And now if you are going to calculate this particular thing, v into tau is nothing. V into tau naught root under 1 minus v square upon c square must be greater than L or L naught. Now आपको समझ में आ गया कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हो कि पायोन यहां से यहां आ गया? Yes or no? Yes. Now
अब दूसरे तरफ से देखते हैं. द पर्सन हु इज सिटिंग ऑन पायोन will see this whole length as a moving or stationary. ये पूरा लेंथ को मूव करता हुआ देखेगा या स्टेशनरी देखेगा? Moving. मूविंग. Then he will see length contraction or time dilation. Length 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 contraction. contraction. Then this person, the person who is sitting on pion, will see new L, and this L is L naught root under 1 minus V square upon C square, and that is your H. जो पहले H आपने कैलकुलेट किया था, that is the same thing, and this H is nothing V into tau naught. Are you getting my point? V into tau naught is your L naught 1 minus V square upon C square. And what is your V into T? Tau? What is your V into tau? V tau not. V tau is obviously greater than L naught or equal to L naught. So this is the same thing. This is the same thing that you can understood by the length contraction as well as you can understood by the time dilation. The same thing we can verify with the length contraction. So you should ask, sir, what is this H? How you can get this particular H? Yes, if this person is going to measure how much distance I am going to travel, then he is not going to travel a total distance L naught, but he is going to travel a distance H, which will be less than L naught. Which will be less than L naught. So who will see the time dilation? अर्थ वाला पर्सन, Earth wala person time dilation. And who will see the length contraction? Observer. पाइयोन वाला पर्सन, Pion wala part. है ना? So you can make a symmetry. आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हो. यहां पर ऑब्जर्वर अर्थ पे है और पायोन पे है. लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन. ओके. तो अगर ऑब्जर्वर अर्थ पे है, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होगा या प्रॉपर होगा? Proper. प्रॉपर. अगर ऑब्जर्वर पायोन पे है तो कॉन्ट्रैक्टेड होगा या फिर प्रॉपर होगा? Contracted. कॉन्ट्रैक्टेड. अगर ऑब्जर्वर आपका अर्थ पे है तो टाइम का क्या होगा? डायलेशन, Dilated. डायलेटेड. एंड ऑब्जर्वर अगर पायोन पे है तो टाइम का क्या होगा? प्रॉपर, Proper. So you can have this sort of symmetry and you can easily use this thing to verify your experimental results. तो TIFR का ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है. क्या करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में, इसको इजिली इंक्लूड कर देते हैं कि न्यूक्लियर फिजिक्स से पहले आप टाइम पीरियड लाइफ टाइम निकालिए और लाइफ टाइम निकालने के बाद आप उसमें STR को यूज कर सकते हैं. ठीक है. सो आई थिंक एवरीवन हैव अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर वेरी नाइस बट ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट. है ना? Sir? समझ में आया कि बताओ? सर यहाँ पे H को V tau नॉट के इक्वल कैसे किया? हाँ, तो ये तो यही तो है ना. H आपने कैसे निकाला था? V इंटू टाउ नॉट ही तो निकाला था शुरुआत में. लाइफ टाइम आपने क्या लिया था शुरुआत में? टाउ नॉट ही तो लिया था ना. Yes, yes. तो वही तो है. Everyone is comfortable? So एक प्रॉब्लम आपके ट्यूटोरियल में दिए हुए हैं, जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट. है ना? उसको सॉल्व करके देखिए, आपका बिल्कुल ही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट निकल जाएगा, ठीक हो जाएगा. ठीक है. सो दैट इज द सेम एक्सपेरिमेंट के ऊपर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया हुआ है और इस तरह के यूज हम इन जनरल लेबोरेटरीज में, हाई एनर्जी के लेबोरेटरीज में करते हैं, जहां पर बेसिकली हेड ऑन डिफरेंट कॉलिजन के थ्रू नए पार्टिकल्स बनते हैं, तो उसकी लाइफ टाइम निकाली जा सकती है और बाकी सारी चीजें भी हम देख सकते हैं. ठीक है. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग
और इसका जो सबसे ज्यादा यूज हम अभी के समय में कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं बेसिकली जीपीएस को और भी ज्यादा अप टू डेट करने के लिए, है ना। इंजीनियरिंग में, कम्युनिकेशन में इसका बहुत ही ज्यादा यूज कर रहे हैं। बहुत ही हाई लेवल की डिफेंस की जो जीपीएस होती है उसको अप टू डेट करने के लिए हम यहाँ कर रहे हैं, है ना। क्योंकि सैटेलाइट आपका बहुत ही फास्ट वेलोसिटी से जा रहा है, सो उसके ऊपर जो टाइम है, जो नीचे बैठ करके ऑब्जर्व कर रहा है, वो निश्चित रूप से कुछ डायलेटेड टाइम देखेगा, है ना। तो उसको हम मैनिपुलेट करके फिर एक्यूरेट डेटा बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एनीवे, सो दैट इज डिफरेंट इशू, बट आपको अपने चीज पर बिल्कुल ही कमांड करना है कि कहां पर आपको लेंथ कॉन्ट्रैक्शन लगाना है और कहां पर आपको टाइम डायलेशन लगाना है, ठीक है। अगर पायोन पे बैठे हो तो क्या लगाओगे, चलो एक बार रिवाइज कर लो। कहाँ पे बैठे हो? पायोन पे बैठे हो तो क्या लगाओगे, लेंथ लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। और अगर अर्थ पे बैठे हो तो क्या लगाओगे, टाइम टाइम डायलेशन। ठीक है। ओके, चलो। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग बात करेंगे बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग थिंग जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट है फॉर द एसटीआर। सो वी विल जस्ट टॉक अबाउट लॉस ऑफ साइमल्टेनिटी, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।